So, namaskar all of you. So, OCS mains ପାଇଁ କିଛିଟା value addition ଆମେ discuss କରିବା। ତ ଆଜିର session ରେ ଆମେ economic data କିଛିଟା ଦେଖିବା। ଏମିତି 3-4ଟା sets ଅଛି। ଯୋଉ PDF ଟା ମୁଁ use କରିବି ସେଇଟା ଆପଣ download କରିଦେଇ ପାରିବେ ଆମର Telegram channel ରୁ। ଆଉ only important data କାହିଁକିନା data ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ବହୁତ ଗୁଡେ data ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ତ ଆମକୁ ସବୁ ଗୁଡା ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟା ଧରନ୍ତୁ 20ରୁ 25ଟା ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଆପଣ କୋଉ ଅପସନାଲ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ ଏସଏ ପେପରରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ ଆଉ ଜିଏସ୍ ପେପର 3 ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ହେଲ୍ପ କରିବ ସେମିତି ଆମର ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ଯୋଉ सब मॉड्यूल्स ହେଇଗଲା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା ସୋ ଏବେ ଆଜିର ଯୋଉ ସେସନ ରେ ଆମେ ବେସିକାଲି ଦେଖିବା କଣ ଯୋଉଟା କି ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ ଡେଟା ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଓକେ ସୋ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେନ୍ ସୋ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ मी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एटा गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट सब टॉपिक टा जहार भी जो तार डेटा अच्छी सेटा आपण आंसर्स रे भी जीएस रो आउ केतेटा ऑप्शनल्स रे भी आपण दे परिबे एस रे भी दे परिबे तो रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 हमारा रोची 6.8 to 7.2%. Okay, one of the fastest growing economies, major economies in the world. Medium term growth potential पाखापाखि 7% रो रोज तापरे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 रे पूरा एस्टिमेटेड रियल जीडीपी ग्रोथ सेटा अराउंड 7.4% अछि ठीक सेमती इकोनॉमी रो कंडीशन टा केमती अछि सेटा हमें प्राइवेट कंजम्पशन तो जानि परिबा ओके सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो पीएफसी टा फाइनेंशियल যেটা আপনার প্রাইভেট ফাইনাল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার পিএফসি সেটা अराउंड 61.4% অফ জিডিপি যেটা কি আমরা H1 ফাইনান্সিয়াল ইয়ার 26 রে আপনাকে ওকে फर्स्ट हाफ रे जोटा आपण पाउछन ओके सो 61.4% तापरे ओडिशा स्पेसिफिक जदि हमें देखिबा एई सब हेडिंग अंडर रे त माने इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जीएसडीपी ग्रोथ हमर ओडिशा रे 2025-26 रे 7.9% हिचे कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जोटा जोटा की नेशनल एवरेज रु अधिक ओके कहना नेशनल एवरेज आपनकर 7% पाखापाखि होई परिबा 6.8 रु 7.2% ओके साइज जदि हमें देखिबा ओडिसा रो जीएसटीपी रो 2025-26 रे 9.88 लाख करोड़ ओके पाखापाखि 10 लक्ष कोटी ओके सेटा हमें मार्क कर परिबा तापरे पर कैपिटा इनकम 24-25 रे अराउंड 1,82,548 ओके तापरे आउ किछिटा जोडा की पॉइंट्स हिसाब रे हमें लिखि परिबा ए इकोनॉमिक्स अंडर रे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जोटा हमें 5 ईयर प्लान रु शिफ्ट करि सरछु बहुत आगुरु नीति आयोग आउ ड्यू टू दिस कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बॉडी छि सेथरे ओके ए दीटा कांसेप्ट आपण पॉलिटी रे भी पढि छथि प्लस आपण ताको इकोनॉमिक्स रे भी किछि जगह रे पढि छथि ओके सो करेंटली विकसित भारत at 2047 infrastructure led growth manufacturing push digital public infrastructure out green transition ओके आ ऊपर नेशनल फोकस रोची ठीक सेमती ओडिसा रे भी विकसित ओडिसा बाय 2036 ता ऊपर हमें प्लानिंग करछु जो थरे प्रायोरिटी सेक्टर्स ओडिसा रे एग्रीकल्चर माइनिंग एंड मेटल्स केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स
information technology, tourism, MSMEs और food processing एगुड़ा हमर रही ओके तापरे हमर जो टेस्ट सीरीज चलची ता विषय कुछ कहबी ऑलरेडी टेस्ट नंबर 1 2 और 3 कवर हे गलानी 55 टा टेस्ट रहउची तो मैक्सिमम टेस्ट आपण यू कैन गो थ्रू इट ओके बहुत माने डिटेल्ड तार एक्सप्लेनेशन अछि विद इन द वर्ड लिमिट एंड 55 टा टेस्ट अछि जहा भीतर जेति कि आपण को पॉसिबल हैला आपण लेखि कि पठे परिबे 4 डेज रो इवैल्यूएशन रहउची एक्सपर्ट इवैल्यूएशन एतरे रहउची आउ तापरे एंटायर पेपर 1 2 3 4 एसे इंग्लिश ओडिया सब कवर करू और बोथ ऑनलाइन और क्लासरूम मोड रे रहउची एटा क्लासरूम हमरो भुवनेश्वर रे खंडगिरी मणिपाल हॉस्पिटल पाखरे हमरो सेंटर ता अछि आउ मेजर आर एडवांटेज कोन रहउची आर जो मॉडल आंसर ता में दोछु सेटा वर्ड लिमिट भीतर रहउची आउ मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर करूछ ओके सो ऑलरेडी एटा स्टार्ट हे गलानी 6 तारिख रु 13 टा ऑप्शनल रो भी स्टार्ट होउची सेटा मो आपन को आउट वीडियो रे कहबी सो next lesson to mobilization of resources this is also very important so union budget 2026-27 around 53.5 lakh crore ro expenditure okay central budget national budget tapare centers physical deficit 2026-27 re okay eta hala 4.3% of gdp okay tapare debt to gdp ratio 2026-27 55.6% ओके सेटा रहउची एठी दीटा टर्म आपण देखुचंती बीई आउ आरई बीई टा हैला बजट एस्टिमेट आरई टा हैला रिवाइज्ड एस्टिमेट ओके जेतोले एक्चुअल डेटा आसे पुन सेटा रिवाइज हुए बजट रे सो आरई टा हैला रिवाइज्ड एस्टिमेट ओके एठी जो हमें बीई आउ आरई देखुछ ओके नेक्स्ट ओडिशा को जदि आसीबा 2025-26 ओडिशा बजट 2.9 लाख करोड़ रो थिला आउटले आपनकर 65,012 crores थिला okay which is around 6.11% of gross state domestic product fiscal deficit 3.2% of GSDP रे थिला ओडिशा is one of the best states जो थरे की आपनकर फिस्कल प्रुडेंस प्रॉपर्ली मेंटेन कराइछ ओके नीति आयोग रो रैंक रे किछि वर्ष आगुरु ओडिसा रैंक 1 रे थिला फिस्कल प्रुडेंस रे ठीक अछि डेप्ट जीएसडीपी रेशियो सेटा अराउंड 12.7% थिला तेनु अलगा जदि स्टेट्स को आपण देखिबे ताठू कंपैरेटिवली लो डेप्ट स्ट्रेस अछि तो एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा एसएस रे किबा ए आंसर से भी आपण दे परिबे अलगा स्टेट्स रे ड्यू टू वेरियस रीजन फ्री बीएससी पई तांकर बहुत हाई डेप्ट स्ट्रेस अछि बट ओडिसा रे एटा मात्र 12.7% ओके तापर आसंतु अनएम्प्लॉयमेंट और लेबर मार्केट एटा जीएस रे जेते दरकार हबो एसए रे काहे कि हमर जहा भी हले वुमन को रिलेटेड किबा सोशल इश्यूज रिलेटेड एसएस भी आसे सो educated unemployment rate okay it reduced from 15 plus age group re 7% in 2024 to 6.5% in 2025 urban female employment 6.7% to 6.5% को खसीची 24 रो 25 ओके बट एम्प्लॉयमेंट रो प्रॉब्लम्स को रोची कंसर्न्स को रोची बहुत हाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अछि आउ ता भीतर भी इनफॉर्मल लेबर स्किल मिसमैच रोची लोकर स्किल अधिक अछि किंतु ताको अपॉर्चुनिटी की क्रेडिट की सेडा न मिलिबारु सी आउट एमती काम करची जोटा की ता स्किल रु सेटा कम सी आउरी भी बेटर वैल्यू एडिशन करि परिबो ओके बेसी प्रोडक्टिविटी दे परिबो इकोनॉमी तापरे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो थरे की तांकर क्वालिफिकेशन ओके हिसाब रे चाकरी मिलुनी लोकों को किंबा से माने
अपॉर्चुनिटीज ताको मिलुनी कि से माने स्टार्ट करिवे किछि गोटे बिजनेस करिवे ओडिसा रे जदि हम देखिबा मेक इन ओडिसा स्किल डेवलपमेंट मिशन एमएसएमई प्रमोशन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन और टूरिज्म एंड सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट ओके एटा बहुत ही इंपोर्टेंट इंक्लूसिव ग्रोथ ओके ऊपर क्वेश्चंस जहां भी पड़े तो नेशनल लेवल रे आपनकर एमडीपी जोटा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डिक्लाइन फ्रॉम 24.85% in 2015-16 to 14.96% in 1921 okay so same period 13.5 crore people were taken out from multidimensional poverty okay rural poverty declined 32.59% to 19.28%. Urban poverty 8.65 to 5.27% को decline करिछि ओडिसा रे जति हम देखिबा हमर फोकस इंक्लूसिव ग्रोथ पई ट्राइबल डेवलपमेंट regional imbalance between coastal and KBK regions, poverty reduction, health and education gaps, livelihood security, and disaster resilient development. Okay. तापरे गवर्नमेंट बजेटिंग के असंत तो फिस्कल डेफिसिट ओके पर 2026-27 budget estimates say 4.3% of GDP. Revised estimate 2025-26 no 4.4% of GDP. Okay, our debt to GDP ratio 55.6%. Okay. Capital expenditure continued as the driver, growth driver. तापर ओडिसा रे जदि देखिबे रेवेन्यू सरप्लस लो डेप्ट बर्डन हाई कैपिटल आउटले और एफआरबीएम रो कंप्लायंस ओके फिस्कल responsibility and budgetary management तापर कैपिटल आउटले ओडिसा रो 2026-27 रे estimated to be more than 6.5% of the gross state domestic product okay तापर land reforms को आसिले एटिकली पॉइंट्स उडा अछि you can go through those points okay national level re it remains incomplete due to tenancy insecurity fragmented holdings and poor land records एबे प्राय सबु स्टेट रे डिजिटलाइज कर देलेनी डिजिटल इंडिया record modernization program and स्वामित्व are important reforms eta examples अपन दे परिबे land leasing reforms are needed for tenant farmers ओडिसा रे जदि देखिबा tribal land protection is crucial land alienation is a major issue in scheduled areas industrialization creates land acquisition and displacement challenges and forest right act implementation is important for tribal livelihood security excuse me so next हमर जो माने एबे प्रिपेयर करिया पे चाहउछन्ती सिविल सर्विसेज में आईएएस में तो नुआ बैच हमर जुलाई 13 से स्टार्ट होची बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन तो एथरे प्रीलिम्स मेन इंटरव्यू भी कवर होची एंटायर एग्जाम टा वैलिडिटी आर होची टिल सक्सेस और एथरे डिटेल पढाउची एंति नै खाली पॉइंटर्स दियाबो कि मेंटरशिप दियाबो मेंटरशिप बैचेस अलगा अछि एटा हला डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव बैच टा एथरे 16 टा आपनको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल रोची टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रोची ओके एंड बोथ क्लासरूम एंड ऑनलाइन मोड रे आपण जॉइन करि परिबे ओके तापरे लिबरलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखंतु post 1991 reforms led to higher private investment trade openness service sector growth FDI inflow disinvestment financial sector reforms okay current policy instruments like the okay production linked incentive schemes make in India startup India IBC GST okay जोटा कि आपनकर बैंक्रप्सी कोड्स करिका आउ पीएम गति शक्ति आ ऊपर फोकस देबे आउ एगुडा एग्जांपल्स भलिया दे परिबे ओडिसा रे प्राय हमर इन्वेस्टमेंट आसुची ग्रीन एनर्जी स्टील फूड प्रोसेसिंग टेक्सटाइल्स लॉजिस्टिक्स और केमिकल्स ओके तापरे
around 25,000 crores ଆମର 6 sectors ओके ए जो हमें देखिलु ताकू नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट ओके ओडिशा सिक्योर करिछि ओके इंफ्रास्ट्रक्चर रे सिमते अपन जे देखिबे एनर्जी इज इंपोर्टेंट installed power capacity by March 2026 is around 532.74 gigawatts okay our renewable energy re ame one of the world leaders now okay our the conference of parties 21 target of 40% non-fossil fuel electricity capacity सेटा हमें इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जे कि ताको ahead of schedule हमें अचीव कर सकते तो एटे एनवायरनमेंट की ता ऊपर भी क्वेश्चन पड़ला ताले हमें एई डेटाटा दे परियो रोड्स को असंतु नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन पेस इंक्रीज फ्रॉम 11.6 kilometer per day in 2013-14 to around 34 kilometer per day in 2025 okay and it has increased 6.4 times between 2013-14 and 24-25 since the railways does declare more than 96% of the 2,843 kilometer dedicated freight corridor network was operational by March 2025. More than 99% railway broad gauge electrification was completed by August 2025. Okay. Odisha रे देखिबे इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हमरो पोर्ट्स करिका पारादीप धामरा गोपालपुर मिनरल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स okay expanding industrial parks power availability of coastal economic potential Odisha रे जब देखिबा installed power capacity by September 2025 around 9,000 megawatts हमरो रही next industrialization in Odisha so strengths कौन ओडिसा रो गोटे इंडस्ट्रियल हब अपनी मिनरल्स हमारो अछि मिनरल स्टेट ओके स्ट्रांग बेस इन स्टील एल्युमिनियम पावर कोल पोर्ट्स एंड पेट्रोकेमिकल्स सो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स ए हाई शेयर टू ओडिशा's इकोनॉमी जोटा भी और बढ़ुची सेटा ओडिशा's industrial development plan aims to attract around 2.5 lakh crore investment and generate 30 lakh employment opportunities तो इंडस्ट्रियलाइजेशन रे एटा जो प्रोजेक्शन टा कि केते इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट करछु आउ केते अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट से थ्रू जनरेट हबो ए दिटा में दे परियो बट प्रॉब्लम्स कोन होची हम इंडस्ट्रियलाइजेशन संगे लैंड एक्विजिशन ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन माइनिंग डिपेंडेंस लो डाइवर्सिफिकेशन रीजनल इम्बैलेंस स्किल गैप एंड वीक डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री ओके कहा ऊपर फोकस करा होची ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी ब्लू इकोनॉमी जेतो हमर बड़ कोस्टलाइन अछि पोर्ट लेड डेवलपमेंट फूड प्रोसेसिंग टूरिज्म आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बायोटेक्नोलॉजी एंड एमएसएमईस ओके सो एटा सेट 1 थिला तो आ ए सेट ता आपण डाउनलोड कर परिबे हमर टेलीग्राम चैनल रु नेक्स्ट सेट रे आमे आउ किछटा इंपोर्टेंट डेटा देखिबा सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन रिजल्ट्स आपनकर खूब शीघ्र आसी जिवो मेंस रो जो माने मेंस आंसर राइटिंग पाई वेट करिसंती टेस्ट सीरीज करिका पाई कि रिजल्ट बाहर रे जॉइन करिवे ताहले एही टाइम वेस्ट न करिकी you can write some answers previous year's question है ना okay so that आपण गोटे फिक्स टाइम भितरे केमती लिखिबार अछि ताकू आपण जेमती सारी परिबे ओके अपार्ट फ्रॉम आवर पेड टेस्ट सीरीज हमें किछिटा ओपन टेस्ट सीरीज भी करिवु एतरक so after the results I will tell you the details of those things जो माने ऑप्शनल टेस्ट सीरीज पे इंटरेस्टेड 6 तारीख रु स्टार्ट होछ हमें 13 टा ऑप्शनल जते कॉमन ऑप्शनल्स अछि सब गुडा प्रोवाइड करछु आ सेटा स्टार्ट हबो आपनकर 6th of July ओके सो आई विश यू ऑल द बेस्ट नमस्कार